हेलो एवरीवन, दिस इज नीलांजन बोस फ्रॉम CIMAGE ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आप लोग कई बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि सर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में और कुछ वर्ड हम लोगों को बताइए। ऐसा कुछ शब्द का उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं जो एक्चुअली गलत होता है। तो सर एक वीडियो तो आप उसके ऊपर बनाए थे और कुछ शब्द हम लोगों को उसके बारे में जानकारी दे। तो चलिए आपका ये डिमांड को देखते हुए हम और एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जो 8 सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में आपके सामने आज बात करेंगे। ऐसा कई शब्द है जो हम लोग डेली लाइफ में गलत बोलते हैं, बट अननोइंगली हम लोग बोल देते हैं, जो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि वो गलत है। तो ऐसा कौन सा शब्द है, और ऐसा 8 शब्दों के साथ आज का ये वीडियो आपके सामने हम पेश करूंगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉन्ग एक्सप्रेशंस व्हिच वी यूजुअली यूज इन आवर डेली लाइफ। राइट, तो आप इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, और in the coming days, definitely you are not supposed to use the wrong application of these words. I am quite sure about it. अगर वीडियो अंत तक देखिएगा और सारा वर्ड को आप जानकारी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा, तो आई एम क्वाइट श्योर दैट अभी से आप बोलोगे कि अभी से सही इंग्लिश बोलना हम शुरू कर दिए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेसन व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, दैट wrong expressions should not be allowed while speaking. तो चलिए अभी से सही इंग्लिश बोलना शुरू करो मेरे साथ। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग अक्सर गलत बोलते हैं, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज ब्रीफ समरी। Look, friends, if you are saying brief summary, what do you mean by summary? First of all, let me tell you, summary मतलब होता है संक्षिप्त। मतलब किसी कोई एक पर्टिकुलर पैसेज का एब्रिजमेंट जब आप करते हैं, उसको जब शॉर्टेंड करते हैं, तब उसको समरी बोलते हैं। नाउ आप इफ यू आर सेइंग द वर्ड लाइक समरी, नाउ व्हाई आर यू यूजिंग ब्रीफ? ब्रीफ का मतलब भी तो संक्षिप्त होता है। तो इफ यू आर ऑलरेडी सेइंग द वर्ड लाइक समरी, तो उससे पहले ब्रीफ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। But in our daily life, whenever we speak with the other people, we speak to the other people, definitely at that particular point of time, many of the people are committing this kind of mistake like brief summary. Brief कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि already you are using the word summary, and I have already told you that summary का मतलब क्या होता है? Abridgment. So double word, double meaning, एक ही word का दो दो बार application करना, is it justified? Not at all. So my dear friends, from now onwards you are not supposed to do this kind of mistake. Brief summary नहीं होता है। Always do remember that summary word से पहले कभी brief word को use नहीं करना है। So that is the first expression, and it is known as redundancy or superfluous expression what I have presented. Right? So let us know what is the second expression of today जिसमें हम लोग unnecessarily कोई word को use करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है, इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फाउंड द स्टूडेंट्स टू हैव द रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ दिस वर्ड्स। आप जब रिकॉल बोलते हो, रिकॉल का मतलब क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉल? रिकॉल का मतलब होता है रिमेंबर, दोबारा उस चीज को याद करना जो पहले घट चुकी है। राइट, सो इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग द वर्ड रिकॉलिंग, रिकॉल का मतलब दोबारा उस चीज में वापसी करना, तो बैक में तो जाना ही है, तब जाके ना रिकॉल करना है। सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर यूजिंग the word, when we use the word like recall, तो उसके साथ हम backword को क्यों यूज करें? Recalling, already back is already implied in the word recall, so already implied word को दोबारा उसमें यूज करने का क्या justification है? Not at all. You are not supposed to use the word like recall back. Instead of that, what you are supposed to use? It should be only recall. So backward नहीं होगा। If you're using the word back after recall, it is called redundancy, or it is to be considered superfluous expression, जो unnecessarily कोई word को हम लोग add करते हैं। So do remember that. Next time when you are going to use the word like recall, you should not add the word back after that. Right? So let us know what is the third word for today. The third word is close proximity. My dear students, you should remember what is the meaning of proximity. Proximity का मतलब क्या होता है? Proximity मतलब होता है
closeness, right? Proximity means closeness. So closeness word is already implied in the word proximity. Now, when you use the word like close proximity, that is wrong. Why? Because I have already told you कि proximity word में ही closeness implied रहता है. So if something is already implied, then why are you using that word again? अब दोबारा उस word का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? So close proximity कभी नहीं use करना है. आज का इस वीडियो देखने के बाद I can give you guarantee you will come to know there are so many expressions which we use wrongly in our daily life. But actually from now onwards, after the completion of this video, you are not going to use it wrong, right? Whatever you are going to use, and that should be a correct expression and without having any superfluous expression, right? So close proximity is wrong. Instead of that, you should use proximity because closeness is already implied in that. So that was word number 3 or expression number 3 of today. Now let us move to number 4. What is that? Let us know. नंबर 4 में ऐसा एक एक्सप्रेशन है जो अक्सर आई हैव फाउंड सो मेनी पीपल हु यूज इट रॉन्गली. क्या है ये एक्सप्रेशन? चलिए हम लोग जान लेते हैं. इट इज कॉल्ड एंड रिजल्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंड रिजल्ट? अब रिजल्ट का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द वर्ड लाइक रिजल्ट. इसका मतलब होता है आउटकम. और आउटकम कब आते हैं? इफ यू हैव स्टार्टेड अ मिशन, इफ यू हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, सो एट द एंड ऑफ दैट whatever outcome is getting out, then that is known as the result, right? तो वो तो end में ही आना है. वो तो beginning में कभी result आपको मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है. So if you are getting something at the end of any event or any project or anything, so why are you using end word with the result? Result के साथ आप क्यों end को use करोगे? बिल्कुल गलत है ये. करेक्ट. तो यहाँ पे instead of end result, what you were supposed to use, it should be only result. So end word को हटा देना है because at the end everything what comes out that is known as result. So end result application is wrong. यहाँ end जो word है that is known as redundancy. So you should remove the word end. Isn't it interesting? Yeah, there are so many words which are going to be interesting in today's session. Just listen carefully and watch the video till the end so that you will have a good stock of superfluous expression and you will come to know कि कब किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, कभी unnecessarily हम word को क्यों यूज करें, right? So let us know what is expression number 5 या word number 5. I must say that in our daily life, number of times we are committing this mistake. कई बार ऐसा ओकेशन हुआ है जब हम लोग प्रोटेस्ट अगेंस्ट वर्ड को बोलते हैं. सो एक्चुअली व्हाट वी आर यूजिंग दैट इज रॉन्ग. प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्या होता है? इट्स एब्सोल्युटली सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन. इसमें अननेसेसरीली हम लोग अगेंस्ट वर्ड को रखते हैं. क्यों? क्योंकि आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से आप सोचिए कि प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है. इफ यू आर प्रोटेस्टिंग, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग अगेंस्ट समबडी, यू आर पुटिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन अगेंस्ट समवन्स ओपिनियन. प्रोटेस्ट का मतलब ही तो होता है विरोध करना, तो ऑफ कोर्स वो किसी के विरुद्ध होगा ना. तो अगेंस्ट बोलने के यहाँ क्या जस्टिफिकेशन होता है? अगेंस्ट या नहीं बोला जा सकता है. सो यू आर नॉट सपोज टू यूज द एक्सप्रेशन लाइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट. इंस्टेड ऑफ दैट यू आर सपोज टू यूज protest only. That means objection. And if you are raising some objection, it should be against somebody else. तो यहाँ पे against word की कोई जरूरत नहीं है. कोई necessary word या essential word बिल्कुल नहीं है. So when you are going to use the word protest, it should not be followed by against. Do remember that. आज के बाद कभी भी आप protest against नहीं बोलोगे. देखो, बहुत simple सा logic है. Whenever you are going to speak English with somebody else, तो वहाँ पे आप grammatically correct English बोला कीजिए. क्योंकि अगर correct English आप बोलोगे तो आपका एक good impression जाएगा जिनके साथ आप बात कर रहे हो. Though I believe that in spoken English grammar is not 100% followed, but actually if you are learning something, why don't you apply in your daily life? You should, isn't it? Right. So let us move to expression number 6. आज का ये 6 expression क्या है? चलिए हम लोग जान लेते हैं. देखिए, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. सो मेनी पीपल आर यूजिंग लाइक दैट. अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, जो पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया गया. नाउ यू जस्ट टेल मी, जस्ट थिंक एंड टेल मी कि सरप्राइज का मतलब क्या होता है. सरप्राइज अगर अनएक्सपेक्टेड ना हो तो सरप्राइज होता है क्या? सरप्राइज का मतलब पहले से जिस चीज के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल ना हो.
that's then only it will be called as surprise. तो सरप्राइज तो किसी को अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना, तो पहले अगर एक्सपेक्टेड हो जाए सरप्राइज मतलब वर्ड का क्या मतलब रह जाएगा. सो जस्ट थिंक व्हाइल यू आर यूजिंग द वर्ड्स, अब बोलने से पहले एक बार सोचा करो, थिंक ट्वाइस कि हम कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन वर्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं. सो सरप्राइज मीन्स व्हाट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और फैक्ट. तो इफ समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, सो व्हाई आर यू वंस अगेन एडिंग द वर्ड अनएक्सपेक्टेड बिफोर द वर्ड सरप्राइज? You should not do like that, right? So unexpected surprise की जगह आपको बोलना होगा only surprise. Why? Because unexpected element is already implied in the word surprise. Isn't it interesting? Yeah, of course. There are so many expressions up till six different expressions you have come to know, which we are using on daily basis in our life, and that is wrong actually. So you are supposed to rectify it as early as possible. And I'm quite sure after watching this video, definitely you should not use the wrong expression, right? So let us move to the seventh word or expressions of today, which is known as superfluous expression. चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें और क्या ऐसे surprising elements है. Let us move to it. Yeah, it's very interesting. Usual custom. I have found number of people to use like that. Usual custom. Usual custom क्या होता है? What is the meaning of custom? पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि custom मतलब क्या होता है. Custom मतलब होता है ट्रेडिशन, जिसको हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं, कोई रीति रिवाज, राइट? तो वो तो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं. कोई ऐसा सिस्टम जो पहले से प्रिविलेंट है, जो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. सो यूजुअली वी आर सपोज टू डू लाइक दैट. यूजुअली वी फॉलो दैट कस्टम. तो आप जब यूजुअल कस्टम की बात करते हो तो दैट इज रॉन्ग. यूजुअल आप क्यों यूज कर रहे हो वहां पे? कस्टम में ही तो, कस्टम वर्ड में यूजुअल वर्ड इम्प्लाइड रहता है. यू नो दैट. सो इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट, स्टिल यू आर यूजिंग द रॉन्ग एक्सप्रेशन लाइक यूजुअल कस्टम. कभी यूज मत करिए आप आज के बाद, बल्कि अभी से आप इस चीज को रेक्टिफाई कर लीजिए. व्हाइल यू आर गोइंग टू यूज द एक्सप्रेशन लाइक यूजुअल कस्टम, यू रिमूव द वर्ड यूजुअल बिकॉज इट इज रिडंडेंसी. आप कस्टम जब यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली यूजुअल उसमें इम्प्लाइड रहता है. तो चलिए आज का हम लोग लास्ट वर्ड को तरफ आगे मूव करते हैं और जान लेते हैं और ऐसा कौन एक्सप्रेशन है जो हम लोग लगातार गलत बोलते जा रहे हैं, लेकिन कोई आज तक आपको बताया नहीं कि ये गलत एक्सप्रेशन है, आपको नहीं करना है. I am here, friends, to tell you that what kind of wrong expressions you are using on daily basis. You should rectify that. Let us move to word number 8 of, or expression number 8. This is going to be interesting expression. It's known as funeral service. Now what do you mean by funeral service? If you're using the word like funeral, what does it mean? पहले इस word को तो हम लोग जान ले, तब ना हम लोग उसको explain करेंगे. Funeral मतलब होता है service held shortly after death. आपके neighbor में या आपका family में किसी का अगर death हो गया है, कोई expire कर गए हैं, तो of course उसके बाद कुछ रिवाज होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है शॉर्टली आफ्टर डेथ. तो जो सर्विस प्रोवाइड किया जाए डेथ के बाद, that service is known as funeral service. So service word is already implied in the word funeral. So once again, you are not supposed to use that particular word service after funeral. Funeral के साथ service word का कभी use up मत करो, क्योंकि funeral word में ही service word implied रहता है. And what does it mean? It is a service held shortly after death. So once, if you are using that, you are getting the victim of superfluous expression. You are using superfluous expression. Redundancy का शिकार आप हो जाते हो. आपको ऐसा वर्ड का यूज करना ही नहीं है जो ऑलरेडी उस मेन वर्ड में इम्प्लाइड रहता है. इन दिस पर्टिकुलर केस, funeral word already, service word is implied in the word funeral. So you are not supposed to use funeral service. Service को वहां से रिमूव कर दीजिए. अगर ऐसा आप कर दोगे तो you are using the correct expression. My dear friends, I have discussed 8 different kind of expression which are known as superfluous expression. आज की इस वीडियो देखने के बाद I am quite sure that you people are not going to do the mistake which you used to do earlier on.
राइट। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग डेली लाइफ में अक्सर एक दूसरे के साथ बात करने के समय यूज करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद कभी भी आप इस टाइप का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब भी करोगे करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, राइट। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गेट यू सेटिस्फाइड। आप अगर समझ गए तो अगले नेक्स्ट बल्कि अभी से ही हम उम्मीद करेंगे कि आप सही इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। वीडियो अगर आपको पसंद आया आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले कल में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर रहूंगा। और माय मिशन इज to let you know that what are the things which you are committing mistake in our daily life, what we are doing the mistake। तो इसको आप rectify कर लीजिए, right। अगर आपका इस जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर हम कुछ मदद कर सके, that is my honor, right। That's all from my side। Thank you so much। Take care। Bye bye।